Now we can also calculate molar mass of solute from the relative lowering of vapor pressure. In the earlier video you have seen this, that Pa naught minus Pa upon Pa naught is equal to Xp, okay, which is equal to Wb upon Mb divided by Wa upon Ma plus Wb upon Mb, where Wb is the weight of the solute, Mb is the molar mass of the solute, Wa is the weight of the solvent, Ma is the molar mass of the solvent, and again Wb is the weight of the solute and Mb is the molar mass of the solute. Here Xb is basically mole fraction of the solute, okay. So mole fraction, you know that mole fraction is equal to the number of moles of a component upon total number of moles of all the component in a solution, okay. So here this is basically the number of moles of solute upon total number of moles of the solute and solvent in the solution, okay. So don't confuse here. As Nb is very less than Na, Nb is number of moles of solute and Na is number of moles of solvent. So the value of Nb will be very much less than Na. So it is neglected in the denominator, means that this part is basically Nb, ठीक है ना. मतलब Wb अपॉन Mb, यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली देखा जाए तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं ना सल्यूट का. तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट जो है ये यहाँ पे हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि इसको हम लोग कट कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है. तो यहाँ पे यू कैन निगलेक्टेड. सो द इक्वेशन विच विल गेट विल बी Pa नॉट माइनस Pa अपॉन Pa नॉट विच विल इक्वल टू Nb अपॉन Na विच विल बी इक्वल टू Wb अपॉन Wa अपॉन Ma, ठीक है. यहाँ पे हमने इस वाले पार्ट को हमने इसमें निगलेक्ट कर दिया है, ठीक है. नाउ दिस पार्ट दैट इज Pa नॉट माइनस Pa अपॉन Pa नॉट विल बी इक्वल टू Wb इंटू Ma, मतलब ये डिवीजन में जा रहा है इसीलिए डिनोमिनेटर उसका ऊपर चला गया है और न्यूमरेटर जो है वो नीचे ही रह गया है, ठीक है. तो Wb इंटू Ma अपॉन Wa इंटू M, ठीक. और we can also write this equation as Mb is equal to Wb into Ma, Wa into Pa naught minus Pa upon Pa naught. So this is how you can calculate the molar mass of solute from the relative lowering of the vapor pressure. This is the relationship between the relative lowering of pressure and the molar mass of the solute, ठीक है. This is the equation which is required and which we have derived in this video.